हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पार्ट टाइम आईटी इन्वेस्टर। आई होप आपका काफ़ी अच्छा वीकेंड गया होगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। सो गाइस, जैसे हम लोग लास्ट 4 दिन से डिस्कस कर रहे थे, मार्केट हैज़ एंटर इनटू द बेयरिश जोन। यही हम लोग देख सकते हैं कि 21 जुलाई के अर्ली मॉर्निंग वीडियो में मैंने वार्न किया था। ओके, और 23 को भी मैंने वार्न किया था, मार्केट रेडी फॉर द बिग फॉल, मार्केट रेडी इन द कॉशन जोन। Okay, then this and even on 25th of July as well, I cautioned that market is in bearish zone and it can further fall towards 24,750. 24,750 तक तो गया नहीं, लेकिन 24,850 के अराउंड गया ही है मार्केट। ओके, और ये जो हमारे लेवल्स है, आप देख सकते हो 7 दिन, ओके, ऑलमोस्ट 7 to 8 days ago, ओके, we were maintaining the same levels यहाँ पे। okay, you can go ahead and check my videos of past 5 to 7 days and we have been playing around with the same level. Okay, fair enough. So let's quickly start with the analysis. मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, क्या पोजीशन थी, फ्राइडे को मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या पोजीशन, क्या एडजस्टमेंट किए। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। ओके, सो गाइस, मैंने पूरी जो पुराने मेरे मार्किंग से सब निकाल लिए। ओके, काफ़ी क्लटर हो रहा था इसलिए। So due to lot of clutter, I have removed all my original past markings on the chart. Now it's a fresh chart. So it's very simple. These are the two channels which are crisscrossing. Okay, around this crossing only, it has taken the support. Okay, which is 24,845. It's very critical as well. So what I'm thinking, मुझे क्या लग रहा है guys, कि यहाँ से I think pull back आना चाहिए। Okay, पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक कितना आएगा वो हम लोग चेक करेंगे हमारी ओपन इंटरेस्ट में कि क्या पुल बैक आ सकता है। ओके, और पुल बैक आने के बाद भी गाइस, जब तक कि मार्केट 25,250 के ऊपर जाता नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। ओके, सो वी शुड नॉट बी गोइंग बुलिश, एटलीस्ट मैं बुलिश नहीं जाऊंगा जब तक 25,250 जाएगा नहीं। ओके, सिंस अभी 20 डेमा और 50 डेमा के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, सो आई थिंक इट्स अ गुड strategy to sell the Nifty. Okay, क्योंकि अगर हम पी रेशो में भी चेक करेंगे गाइस आगे जाके स्क्रीनर में, तो आई थिंक पी रेशो में 20-23 के अराउंड चल रहा है निफ्टी का हमारा, जो कि अराउंड 20 के पास काफ़ी हेवी बाइंग आती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक मार्केट 24,500 टच कर सकता है, मे बी दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक, बट बिफोर दैट इट कैन ऑल्सो टच 24,750। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगेगा, तो थोड़ा पुल बैक लगेगा। ताकि अगर हम देखेंगे गाइस यहाँ पे, ओके, अगर इफ यू गो अहेड एंड चेक फॉर द वीक, ओके, तो okay, week 1, week 2, week 3, week 4, okay, 4 वीक कंटिन्यूस हमको मार्केट लोअर लो मेंटेन कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे था, नेक्स्ट वीक वापस लो मेंटेन किया, नेक्स्ट वीक वापस लो मेंटेन किया। ओके, सो अभी जो ये वीक आएगा गाइस, ओके, नेक्स्ट वीक, अगर नेक्स्ट वीक अगर इसको तोड़ना है फॉर द बिलो लेवल 24,500 आना है इसको, सो इट नीड्स टू डिसाइसिवली ब्रेक 24,812। ओके, और बाद में जो सपोर्ट लेगा दैट विल बी 24,500। सो हियर इट विल बी अ बिगर सपोर्ट। सो नाउ फॉर नेक्स्ट वीक, अगर मैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट रेंज बोलूंगा, ओके, अगर मुझे ऑप्शन स्ट्रेटजी करना है, इफ आई वांट टू मेक एन ऑप्शन स्ट्रेटजी विद द आयरन क्वांटम, okay, so my highest range for the upper side will be 25,200, the lower side will be 24,500. So this will be my range. Okay, so this range, okay, let me draw this one for you guys. Okay, if you ask me, okay, so दिस विल बी माई रेंज। ओके, ये 3% के रेंज में ही मार्केट रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, सो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान माई स्ट्रैटेजी, okay, for next week as well. So let's quickly check our options data. Okay, what does it says in terms of open interest? So we are at the open interest 31st July. Okay, so let's see. Okay, 21 at 24,850. We are seeing strong call writing, 24,900, very strong writing at 25,000. Okay, and strong support we can see around 24,700. Okay,
So guys, what I'm thinking is that I think on Monday, market will remain range bound between 24,700 or 24,800 to 24,900 over here. Okay, काफी range bound is सकता market, but I think strong support we can say around 24,700. If we go back over here and we see strong support 24,700. Yes, so I think it can further go down guys over here, and this can be the range if I want to create a range further. Okay, so I think ये range से लेके तो ये रेंज में मार्केट कल खेल सकता है. Okay, if it breaks 24,700 we can further see downward side. Okay, so any gap up, कुछ भी gap open होता है guys, that will be opportunity for selling. At least that's what the open interest data is showing. PCI 0.6 भी है guys, so I'm expecting 24,700 के आसपास आ जाता है और 600 के आसपास आता है तो better है, because PCI will go below 0.5. That is where buyers will come in, and this is where we'll be expecting a sharp pullback. Okay, so that will be the strategy for Monday. Okay, so okay, so let's quickly check the FII position as well. It's purely bearish guys. Okay, you can see यहाँ पे काफी bearish position है for Monday. So definitely जो भी pull back आएगा market में Monday को, so that will get sold. ओके और ऐसे वैसे नहीं है गाइस. ओके 1980 यहाँ पे सोल्ड किया दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में और ऑप्शन में भी बेरिश पोजीशन मेंटेन किया है. ओके, सो वी आर मेंटेनिंग द बेरिश पोजीशन. ओके, even in options, future and cash. Okay, this is not good sign guys. So I think this will be the range. I think range bound to bearish side. This what will be the range for Monday. Okay, so that is the case. Okay, so let's quickly check my positions. So guys, as we discussed on Friday, okay, I have maintained this position, and currently I am running the profit as well around 900 rupees. Okay, so this is a modified strategy guys. Okay, जो मैंने बोला भी था, because if there is a sudden pullback, okay, I don't want it to be in loss. Okay, so that's why I created this strategy. You can see the probability of profit is 98%. The reason for making this strategy, because I don't want to make take risk in this month, because we are already in profit for this month. Okay, so the strategy which we have created is a modified bull conduct. So as you can see, my option premium has decayed very significantly. So what I will do based upon this, my new support and resistance, I will shift my call option to 25,200 or 25,300. So that's what I will do. So if you see over here, okay, if market opens gap down, okay, or at the same position on Monday, okay, let me check this over here. Okay, so I will be already around 1% in profit. So I will further shift this 24,400 and 25,450 to 25,200 position. Okay, and this will create a bear call spread. Okay, so that's what it will be. So I will convert this strategy into the bear call spread, so that will further increase my profit to around 2.5 to 3%. Okay, so that will be strategy for Monday. Okay, now coming, you can see the margin guys. Okay, 2.44 lakhs margins utilized. If you go to L&T position, okay, so guys, on Friday I have shifted my position from 3,580. You can go back and check my video on Friday, to 3,520. Okay, this position. Now this is a modified iron condom. Okay, so in this also we can see that starting Monday, okay, we are having a lot of good news in market for L&T. So I'm expecting market to be little bit of gap up around 3,460 or 480 if this happens. So on Monday excuse me, on Monday, let's say around 9:30 a.m. okay, we will be already in profit of about 3,000 rupees, which is 2.5%. Okay, so guys, you can see if you want to do the option selling in stock
ऑलमोस्ट होल मंथ मेंटेन गाइस, ओके, पूरे 28 डेज लग गए हमको, तब जाके हम लोग अभी प्रॉफिट में आएंगे इफ थिंग्स गो साइड वे। सो आई होप दिस वाज अ गुड लर्निंग फॉर यू गाइस। हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने एडजस्टमेंट किए हैं। नाउ इन द लास्ट वीक ऑफ दिस एक्सपायरी मंथ, डीके विल बी हेवीली impacting our profit and loss, okay, in positive way, and I'm expecting it to end up in profit around, I think, 4,500, which is 5% of our used capital, okay, for this LNT. This I think that's why I mostly avoid doing the option in stocks, because patience required is very high. Okay, weekly is fine. Okay, you put the money and within a week you end up in 1% at max, sorry, at low 2%, 3% in profit of your deployed capital, and you're good to go. Okay, but here, even though I had deployed 1.26 lakhs, so my return will be around 4%, 5% for whole month. Okay, so I hope, I think this was a good learning, but we can also do this. Okay, if someone is not comfortable with the weekly option strategy. Okay, so that is the case over here. Let's quickly check with our single trade. So as expected, I think last and turbo हमने 3,500 के ऊपर मैंने purchasing किया था. I think 3,442 level पे I will not further enter on this part. I think I will maintain my position 3,500. Dr. Reddy's Lab, due to the, I think, so-so result, it has bounced back from 1,232, 1,270. I will wait for again level to come back to 1,230, 1,230, sorry, 1,230 rupees. Okay, and camps, I think it is come back to my level of 4,000 rupees. So let's say on Monday or Tuesday it further goes down to 4,000, 3,100. I will again re-enter into this swing trade. In the past, you can check my shorts guys. Okay, in the shorts अब हमने देखा था यहाँ पे मैंने camps का position लिया था बहुत बार यहाँ पे. Okay, where is camps? Yeah, you can see camps position. I have entered and booked the profit multiple times on the camp side. So now it is again in my zone of buying level around 4,000 to 3,900. So this I will do. Adani Power again coming in my buying zone of 550. तो 570 भी काफ़ी अच्छा है. अगर कल 560 के आसपास अगर ओपन होता है तो I will enter into the trade for the Adani Power as well for the swing trade. Okay, so this is a strategy and plan for my next week. Okay, let's quickly check what is the global scenario saying. Okay, so गिफ्ट निफ्टी हमारा आई थिंक 24,842 पे ही है. सो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है अराउंड 1%. नॉट गुड. US market is in 0.5% up. That is good. If we say US TINR is holding at 6.50, I think, which is okay. Then if we go to dollar index is also holding good. जब तक guys run is 100 के ऊपर जाता नहीं, I don't think so much of the impact on us. कम्युनिटी मार्केट में ओके, गोल्ड नीचे गिरा है गाइस, क्रूड ऑयल नीचे गिरा है, ब्रेंट ऑयल नीचे गिरा है. सो दिस इज अ गुड न्यूज़ गाइस. ओके, सो आई थिंक दिस कैन आल्सो गिव अस अ पुश, ओके, फॉर द पुल बैक. ओके, लेकिन मार्केट तो काफ़ी बेरिश दिख रहा है मुझे, तो आई थिंक वी विल ट्रेड इन द बेरिश. एंड लेट्स क्विकली चेक रिलायंस एज वेल गाइस, ताकि अगर ऐसे जब रिजल्ट्स आते हैं ओके, तो रिलायंस, ओके, रिलायंस अपनी सपोर्ट जोन के पास है. ओके, लास्ट स्विंग है 1,350 के आसपास जा सकता है गैस. ओके, सो दिस टू दिस इज अ कंप्लीट बाइंग जोन गैस. ओके, फॉर रिलायंस. ओके, इफ यू आस्क मी. ओके, so if I am an investor, if I am to purchase, so this to this, okay, is a buying zone for Reliance. Okay, तो इसका अगर और नीचे एंटर आता है तो हमारा निफ्टी भी नीचे गिरेगा, और जब रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा. सो एक्सप्रेशन तो ये रहेगा, मे बी आई थिंक रिलायंस भी गैप डाउन ओपन होगा कल मंडे को अराउंड 1350. दैट विल ऑल्सो पुल डाउन ऑफ निफ्टी बैक टू आई थिंक 24,750. Okay, and then again once Reliance start tracing back, our Nifty will also start tracing it back. Same thing I think we can check for HDFC as well. HDFC I think holding strong as. Okay, लास्ट विंग आई थिंक ये भी गैप में ऊपर के रिकवर हो सकता है. ओके, और बाद में हमको देखना है ICICI बैंक. ओके, so I think ICICI Bank, same scenario guys. Okay, I think I'm expecting gap down on Monday. Okay,
and once it enters into buying zone, and once these three stocks will get bought, Nifty will start recovering. So that will be the plan for Monday. Let me quickly confirm. Nifty, yes, I think we should be fine. Okay, so I think 24,700 या Nifty के आसपास आएंगे guys, and उसके बाद फिर stays back करेंगे around 24,000. Okay, fair enough. I think we are set for the Monday, guys. Okay, for the next week, because mostly I think it will be selling. Okay, sell on rise. So I think this, based upon this, you guys can create your strategy and you will benefit from the profit. If you are new to my channel, guys, please don't forget to like, subscribe, okay, and comment, so that we can create a community which will benefit us all in terms of learning the stock market. Thank you very much. See you on the Monday. Have a good night. Bye.